Hi bachchos, Indu ma'am here and today we will do the physics chapter motion. चलो थोड़ा पीछे चलते हैं. In the first chapter, that is chemistry, there was an in-text question. There was a list of things और आपको बताना था ये मैटर है या नहीं. जैसे कि wood matter, water matter, love no, emotion, carbon dioxide matter, hunger no, it's a feeling. Okay, so जिस तरीके से we have got matter and feelings and emotion, there is one more category. उसमें we will be able to measure those things, but they are not made up of matter. For example, time. Matter तो नहीं है. It is not made up of carbon, oxygen, aluminium, platinum. But time तो हमें पता है क्या होता है और होता भी है. Distance. The distance between Mumbai and Delhi. We can measure it. We know what is distance. But it is not made up of chlorine, gold, carbon. है तो सही, but matter नहीं है. We can measure it. Okay? And force. Satak. कितनी जोर से थप्पड़ पड़ा पता तो पड़ता है पर मैटर नहीं. Light, how bright, how dim, but it does not matter. Sound, how loud, how mild, but it does not matter. That means there is another category. Things which exist but they are not matter are called physical things. But we can feel them, we can experience them, so they are physical. Like time, you know how much time it has been since you have started watching this video. Distance, volume, how much water, how much tea. We can measure it, but it does not matter. Tea is matter, but the quantity is not matter. Force, distance. So these are things which exist, we understand, we can measure, but they are not made up of atoms and molecules. So they are not matter. Such things are called physical quantities. Okay? So physical quantities are things which we can realize, we can measure, we can manipulate, but they are not made out of atoms and molecules. And this chapter deals with such physical quantities. To begin with, इस section में हम study करेंगे इनकी दो categories. Okay? There are certain physical things, physical quantities, which we can measure. For example, being a lady, I often watch Sanjeev Kapoor preparing certain recipes on the television. And he says 500 ml of milk. Well, he's got such lovely utensils. इतने प्यारे प्यारे बर्तन हैं उसके पास. और I have that steel container, steel का बर्तन. Okay, but when he says 500 ml, I know what is 500 ml. मैं उसे measure कर सकती हूँ. Okay, so वो number काफी है. 500 और ml कहना भी जरूरी है. If I tell you कि इस lecture के 20 minutes का session है, then you know कि अगर ये 9 o'clock को शुरू हुआ है तो 9:20 को खत्म होगा. अगर 10:15 को शुरू हुआ है तो 10:35 को खत्म होगा. So the number 20 minutes is enough. Okay, but कभी कभी ना गड़बड़ हो जाता है. You know what happened? I'll tell you my experience, my own experience. It is about those times when private banks just शुरू हुए थे. Okay, so HDFC, ICICI, ये दो banks new थे. तो इनकी buildings बड़ी सुंदर and glass door and everything was so very pompous, beautiful. Okay, so मैं ऐसे एक बैंक में गई. कांच का दरवाजा था पूरा का पूरा. ठीक है, and I was little occupied. मेरे पास काफी सारे bags थे, थोड़ा shopping किया था और मैंने हाथ में मोबाइल ले रखा था और मैं किसी से सीरियसली बातें कर रही थी. और क्योंकि हाथ में बैग था, मैं अपने कंधे से यूजिंग माई शोल्डर आई वाज ट्राइंग टू ओपन द डोर एंड आई केप्ट पुशिंग इट. आई वाज टू बिजी इन द आर्ग्यूमेंट कि मैं मोबाइल को दूसरे हाथ में ले लूँ और सिर्फ खोल लूँ. सो आई वाज लाइक ट्राइंग टू पुश इट एंड आई वाज वंडरिंग इतना तो कितना दम लगाना पड़ेगा कि दरवाजा ही नहीं खुल रहा. ओके, एंड आई वाज लाइक इतना फोर्स अप्लाई करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा. तो वहां पे एक देयर वाज अ सिक्योरिटी गार्ड वो आया, उसने एक स्माइल दिया. ही सेड एक्सक्यूज
दरवाजा पीछे खींचा, क्या कचरा हो गया ना। एक्चुअली मैंने फोर्स तो जितना चाहिए था उससे ज्यादा लगाया था, बट मुझे डायरेक्शन नहीं पता था। आई वॉज पुशिंग एंड ही पुल्ड जेंटली। इसका मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन की भी जरूरत है। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए कि यहां पे आप खड़े, ओके, एंड दिस इज a crossroad, okay, and this is you standing over here. आप यहाँ खड़े, ओके, और आपने अभी एक ब्लू कलर की लंबी सी गाड़ी जाते हुए देखी, ओके, एंड इट वाज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर। एंड 5 मिनट बाद पुलिस आई आपसे पूछने को, हे यू, डिड यू सी अ ब्लू कार? हाँ, मैंने अभी देखी 5 मिनट पहले, 5 किलोमीटर। अरे कहाँ पहुंची होगी? 5 किलोमीटर दूर। ओके, 5 किलोमीटर दूर। क्या पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन मिली? क्या वो 5 किलोमीटर यहां जाएगी? Or will it go here or here or here? So 5 kilometers is not enough. I need to tell the direction. Okay? इसका मतलब there are 2 types of physical quantities. Number 1, जिनमें सिर्फ नंबर, जिसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं. Magnitude is the number which depicts how big, how small. With the magnitude and unit are enough. Like 1 hour, 10 rupees, 5 centimeters, 10 kilograms, and so on. और कुछ चीजें हैं जैसे कि फोर्स, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजिशन, जिसके लिए हमें चाहिए डायरेक्शन भी. ओके, सो जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वो हो गया स्केलर. नाउ माइंड यू, स्केलर इज अ नॉटी वर्ड. स्केलर स्केल, इसीलिए स्केलर. This is A. This is the most common mistake, guys. So scalar quantities, you just need to know the scale. Kitna, how much, the magnitude. Okay, and so we need the magnitude. And the other is vector. Vector. Now here too, like doctor, you will have an O, vector quantity. Okay, and that is called magnitude plus direction. Only the number is not enough. Whether I should apply force whether it is a push or a pull, we need to know the direction. Whether the car went forward, towards the right, towards the left, you require to know the direction. So such quantities are called vectors. That's all for now. You came to know what are physical quantities, what are scalars, and what are vectors. And in the next lecture, we will learn more about it. So read the particular part which is relevant to this in your textbook, and if you have any doubt, please write down in the comments. I will surely get back to you. Bye-bye.